अभी भी तो लोग बोलते हैं कि ये कितनी सुकड़ी है, ये कितनी ये है, but I'd never say anything to her. That's how you are, and you look pretty. You're healthy. You can run. When I was pregnant with Pala, I was very scared कि मुझे stretch marks आएगा. These are my awards, and I flaunt them. I like to wear them. Every stretch marks has a story. I like breastfeeding. I as a mother, I enjoy doing that. It's very nice. एयरपोर्ट्स पे या कहीं पे ब्रेस्ट फीडिंग एरियाज नहीं है, आपको स्मोकिंग एरियाज हैं. आप स्मोक करो, पर ब्रेस्ट फीडिंग का नहीं है. क्यों नहीं है? जब मैं छोटी थी तब मैंने हर किसी को सुनते देखा है कि ये उसको देखा वो कितनी सुंदर है, कितनी गोरी है. एंड एवरीबडी हु मेक्स मी रियलाइज आई एम बुड्ढी, आई फील सो ग्लैड दैट आई लिव्ड वन मोर ईयर टू बी बुड्ढी. Oh, she's 41. Oh, yeah, I know, 41. An epitome of dignity and grace, Shweta Tiwari joins me today for a women's special episode only on Bollywood Bubble. Together, me and Shweta will today debunk a lot of stereotypes that have been there for the longest time, and we've all grown up listening to it, somehow internalizing it, and of course now trying to get away with it. You know, Shweta, firstly, welcome to Bollywood Bubble. Thank you, Bhavna. It is always a pleasure to speak to you. Stereotypes, मैंने बोला, and recently I saw a post of yours on Instagram wherein you said you don't care about what people think about you. But that was not a post, that was a quote. This is Shweta today. I want to know, when Shweta started off as a child also, or as a teenager, as a woman in general, was that the scene? Because we do care about a lot of things growing up. Starting from, like मैं अपनी बात करूँगी, starting from how we look, to how we are seen, to how people are judging us, we care about everything. Was that the scene with you as well? Now that you're asking me, I'm trying to remember कहाँ से मैंने बंद कर दिया care करना. I don't even remember if I ever cared. I remember when only one incident I remember. Oh my God, that was so many years back. My mother used to work in a law firm where she was an assistant to a lawyer, and her office was in Bombay Center. So वो दिन भर काम करते थे हाई कोर्ट में. शाम को 5 बजे something he used to finish whatever his argument and court thing. He used to come back in the evening to work. In the office, that's when my mother used to go to the office, 5 o'clock in the evening. जब ये शुरू होता था, उनका टाइम 5 o'clock होता था. She used to leave at 3 o'clock or something, and she used to come back at 10. क्यों 8 साढ़े 8 बजे तक बंद हो जाता था. So around my house, where we used to stay, they used to say ये कैसा काम है कि इसकी माँ शाम को जाती है और रात को आती है. There's something fishy. कुछ तो गलत है. अब वो गलत क्या था वो कभी हमारे कानों तक नहीं आई, पर कुछ गलत चल रहा था आसपास, which I knew कि लोग बात करते हैं. Then I started working. Right. When I started working, she would accompany me. I would come back with makeup. Because of course, when we start working, I was not famous. I used to do small roles, ads, where people, अब तब कहाँ इतनी TV में भी कई चीज़ें आके चली जाती हैं, लोगों को पता नहीं चलता. So I would come in makeup with my mother. So everybody we used to say कि माँ तो जाती थी शाम को, बेटी को भी लेकर जाने लगी. इतना मेकअप कौन करता है, कहाँ करते हैं, क्या होता है? So all these, there I realized, I don't know, but I think that's when I realized, how does that matter? What they speak about us in their houses, as far as it's not affecting us. True. My mother kept working. She never stopped because she had to work to keep her house running. I kept working, and today here I'm wearing the same kind of makeup, again, same kind of, over the top clothes. Over the top तो नहीं है, but हाँ. यही तब भी था. But for them it was, if it's not salwar suit or the dupatta till here, I was about to come there, it is not a good girl wears. So मैं तब की बात बता रही हूँ, आज से 30 साल पहले की, तो वही तो है. So that's what I think. From there I realized it doesn't matter. आप काम करते रहो, eventually सच होता है. They realize कि अच्छा ये था. True. और अगर है तो है, अगर आपको छुपाने की जरूरत है कुछ तो वो गलत है, नहीं तो just eventually. Yeah, why should we care? And I think that is what I think बचपन से इसलिए you have been strong. Maybe because
वहाँ से you I look think से- because my mother is very strong. ये हमारे खून में है. So yeah, I think my mother is very strong, and because of that, I am strong, and I hope my daughter is also very strong. She is already. We grew can up tell you as that, a you strong know, girl. already. Yeah. कभी लेकिन श्वेता, I know I've never really seen you with on the heavier side, but while you were a child and then growing up, did you ever have body image issues? Because that is something we all have been going through in phases, right? Sometimes being too thin is also an issue. Yeah, I was very thin. मुझे याद है मैं कॉलेज में हमारे यहाँ पे हमारे कॉलेज का कॉलेज था, स्कूल था, अब तो मेमोरी भी पता नहीं क्या हो गई है, बुढ़ापा आ रहा है भाई, एज एवरीबॉडी सेज. उस पर भी आएंगे. So अभी मुझे याद नहीं है कि क्या था, लेकिन शायद स्कूल था, पता नहीं क्या था उसमें. स्कूल या कॉलेज के जो फैशन में चलते हैं, मिस दैट पर्टिकुलर स्कूल. Oh, the ramp. Okay, yeah. So I wanted to take part, and of course I was not, my family was not that well to do to have that fancy clothes and to look that pretty and all that. Even in college I used to wear normal clothes without makeup. I was from a very middle class family, lower middle class family. तो मैं जब जाती थी, मुझे याद है एक टीचर ने मुझसे कहा था, और मुझे पता नहीं वो टीचर कभी वो मुझे देखकर कभी पहचानती होगी अब कि नहीं पहचानती होगी, या पता नहीं उसे, आई डोंट नो वेयर शी इज़, पर उसने मुझसे कहा था कि यू कैन बी अ मॉडल, डोंट ट्राई टू फोर्स योरसेल्फ इनटू समथिंग व्हिच यू कांट डू. और उसने मेरा नाम नहीं लिखा था उस फैशन रैंप के लिए, और मैं नहीं बन पाई थी, मैं नहीं चल पाई थी. आई वांटेड टू, एंड टुडे आई एम हियर. आई वांट दैट टीचर टू I'm sure she must be looking at and I want her to remember कि उसने ये बोला था. I'm sure she must recognize, and she. I don't think any teacher should say that to their student. Yeah, true. कभी You should be supportive. Yeah, you should be supportive. तो ये चीज़ बचपन से ना कुछ चीज़ें, एक बात या तो बहुत खुशी की एक बात या बहुत चुभने वाली आपके मन में रह जाती है. Yeah. उन कई सारी बातें जो रह गई हैं मेरे मन में, मेरे दिल में, उनमें से ये बात है जो कभी भी सुनती हूँ तो कभी कभी आपको लगता है ना काश मैं दिखा पाती. But कभी thin shaming जैसे कुछ हुआ? Because that also happens sometimes. Being too thin is also considered. मैंने कभी फेस नहीं किया कभी, पर मेरी एक फ्रेंड है, हाँ. बहुत क्लोज फ्रेंड है, तुम उसको जानती हो. हाँ. Okay. उसको मैंने सुना है कईयों को बोलते हुए कि इतना पतला कौन होता है, इसे कौन देखेगा. मेरा somebody very close to me had also said कि इसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता because she's too thin. Wow. She can never have anybody in her life because she's too Because she's too thin. Too Wow. thin. You know, now today that you are a mother yourself, Shweta, do you ever see your daughter face body image issues or anything like अभी भी that? तो लोग बोलते हैं कि ये कितनी सुकड़ी है, ये कितनी ये है, but I never say anything to her. That's how you are, and you Yeah. look pretty. You're healthy. You can run. Yeah. Your vitals are good. As long as she's healthy, she's as fit far and as she's yeah. healthy, she's good. I don't care what kind of body she is, and I think she's very nice, very pretty, very nice. अभी भी तो लोग बोलते हैं, आजकल तो इंस्टाग्राम में बहुत है ना लोगों को बोलने के लिए, इसको देखो कितनी सुकड़ी है, और क्या malnourished तो बोलते हैं, और क्या एक वर्ड है Anemic. वो नहीं, इंग्लिश नहीं, हिंदी वर्ड है वो, क्या बोलते हैं उसको, बोम्बिल. सुकड़ी बोम्बिल. करेक्ट, ऐसे कुछ मराठी हाँ, तो उसको वो भी बोलते हैं, but then I don't care. I don't think even But has she cares. she ever come to you saying that mom look, I mean, No, not really. She says, people say that, am I really that thin? Am I really that thin? I said, no, you're not. You're okay. जैसे जैसे तुम बड़ी होगी, तुम्हारी बॉडी वैसे वैसे बनती जाएगी. तुम्हारी एज के लिए ये सही है, ये ठीक है, Yeah. ये बस यही है. We are not going to do anything extra just because somebody else thinks Correct. you should be like this. yeah. I'm so glad that this. That's why I say this family in itself is so like powerful and strong in its own way. But Shweta, now coming to you, beauty का एक perception, beauty का एक standard industry में भी है और society में भी है, and we have seen that for the longest time, right? In order to fit in, people do a lot of things, and there are a lot of perceptions that we have. For example, first is stretch mark. I remember for the longest time, बचपन में एक डर रहता था कि यार कहीं stretch mark ना आ जाए. Pregnancy तो दूर की बात है, pregnancy तो comes after a certain point in your life, but even when there's a shift in your body weight and everything, stretch marks come and it's a part of your body, but there's a feeling of shame feel होता है, when you, did you ever face that? I will not lie. I should not lie, but when I was pregnant with Pala,
आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि मुझे स्ट्रेच मार्क्स आएगा, और मैं बार बार अपनी माँ को कहती रहती थी कि माँ मुझे स्ट्रेच मार्क्स आ जाएगा। तब तो पता नहीं था ना कि स्ट्रेच मार्क्स और भी काफ़ी चीज़ों से आ सकता है, तब तो प्रेगनेंसी ही एक स्ट्रेच मार्क्स का जरिया पता था। तो मैं अपनी माँ को कहती थी कि मॉम स्ट्रेच मार्क्स आ जाएगा, मॉम स्ट्रेच मार्क्स आ जाएगा। तो मेरी माँ हमेशा कहती थी इट्स ओके, स्ट्रेच मार्क्स आ जाएगा तो क्या, दैट मीन्स यू गॉन थ्रू सो मच। स्ट्रेच मार्क्स ऐसे ही नहीं आ जाता कि रात को उठो और सुबह उठो तो स्ट्रेच मार्क्स आ गया। देयर इज लॉट ऑफ यू नो स्ट्रेच मार्क्स इज गुड, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम यू आर गोइंग टू यू नो मेक अ ह्यूमन आएगा इस दुनिया में, तुम आई थिंक इट्स फाइन, इट्स फाइन। मैं ये नहीं बताऊंगी कि मुझे स्ट्रेच मार्क्स है कि नहीं है लेकिन We don't want to get into those details, yeah. पर आज I don't know, मैं तुम्हें एक स्टोरी कभी बताई थी भावना? I remember, I was about to say, can you please, because it's such an inspiring story. You were vacationing somewhere. Yeah, I was if I'm out with mistaken, that. yeah. तब रियांश नहीं था, so I हाँ. was out somewhere with my daughter, and my daughter was it was in Goa. गोवा में एक white sand पे, I'm forgetting the name of that. It's बहुत बड़ा ये है होटल. So we were in that swimming pool, and she was asking me to wear swimming two-piece swimming costume. My daughter. I said, no, I'm not going to wear it. She said, no, mom, wear it, please, wear it, wear it. And I don't know why. Not stretch marks से कोई लेना देना नहीं था, मतलब हाँ, but वो एक होता है. हाँ, you बस I was like, I was comfortable. not comfortable. Yeah. So I said, no, I don't want to wear it. तब तक एक foreigner lady थी कोई, वो सामने से मेरे क्रॉस की, उसने टू पीस पहना हुआ था, बिकिनी पहन के वो आई और बैठी, और पता नहीं उन्होंने मेरी आंखों में क्या देखा होगा, मैंने ऐसे क्या रिएक्ट किया होगा, आई डोंट नो। शी हैड सो मेनी स्ट्रेच मार्क्स, सो पता नहीं उन्होंने मुझे बोलते, या फिर उसने मेरे और मेरी बेटी का कॉन्वर्सेशन सुना होगा, उसने कहा कि या यू शुड वेयर इट एंड डोंट बॉदर, डू यू सी दैट गाय देयर। वहाँ पे एक बड़ा अच्छा खासा बड़ा लड़का था पूल के पास, डू यू सी दैट गाय देयर, दैट बॉय, दैट हेल्दी बॉय, I got him in this life. I pushed him out of me, you know, and it was not easy, you know, all these stretch marks. The entire night I used to keep scratching myself. I used to, you know, it was very, very painful. Doctor has said that I cannot deliver. I had so many miscarriages. It was so difficult to get him in this world. And now he's here, right in front of me. So these are my awards, and I flaunt them. I like to wear them. Every stretch marks has a story. That's actually very inspiring. I remember that last time मैंने बताया था, because वो बात मेरे दिमाग में छप गई कि हर stretch mark, every stretch mark has a story. Yeah, there's nothing to be ashamed. Just मेरी friend है, उसने अभी स्विमिंग कुछ महीनों पहले की बात है, स्विमिंग पूल में उसने बिकिनी पहना हुआ है और स्ट्रेच मार्क्स फ्लॉन्ट कर रही है, बहुत आई वाज सो प्राउड ऑफ हर कर रही है, और लोगों ने नीचे कमेंट भी किया हुआ है कि वी आर सो प्राउड ऑफ यू, नॉट टू बी अशेम्ड एंड नॉट हाइडिंग देम, नॉट फोटोशॉपिंग देम, एंड फोटोशॉपिंग तो खैर आजकल बहुत ही ज्यादा वो है, तो या Another thing associated with pregnancy is, of course, breastfeeding. Breastfeeding is so normal, yet it is still considered a taboo. For example, for a new mother especially, if you have to breastfeed in public as well, or just sharing a picture, that too becomes an issue. Did you ever even think like that when you? No, you know, breastfeeding, I'll tell you, I like breastfeeding. I as a mother, I enjoy doing that. It's very nice. अब मैंने अपने बेटे को, अभी मुझे कोविड हुआ जब 3.5 years का था, तब तक मैंने ब्रेस्ट फीडिंग की थी उसे। आप देखो, अगर इतना टैबू है तो एयरपोर्ट्स पे या कहीं पे ब्रेस्ट फीडिंग एरियाज नहीं है, आपको स्मोकिंग एरियाज हैं, आप स्मोक करो, पर ब्रेस्ट फीडिंग का नहीं है। क्यों नहीं है? अगर कोई, आपको पता है डायपर चेंजिंग ये सब लेडीज बाथरूम में है, पर जेंट्स में नहीं है। Yeah, that is a stereotype in itself, right? कि औरतें बच्चों के साथ ट्रैवल करते, मर्द बच्चों के साथ ट्रैवल नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि फादर्स अपने बच्चों को ले जा रहे हैं, लेकिन वो डायपर चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये करणवीर के साथ हुआ अपना करणवीर, वो भी उसने भी प्रॉब्लम उसको हुई क्योंकि वो अपने बच्चियों के साथ ट्रैवल कर रहा था, या एक बच्ची के साथ ट्रैवल कर रहा था, एंड ही वांटेड टू चेंज हर डायपर एंड देयर वाज नो स्पेस, सो ही हैड टू रिक्वेस्ट समवन कि प्लीज इसको टेक हर इन योर बाथरूम एंड चेंज द डायपर एंड गेट हर बैक. So I think that is not fair. Yeah. Okay, you can't do, and also if you don't have a breastfeeding room for ladies who are breastfeeding, that every second person here has a child or a pram, you know, everybody is traveling with that, so you have to have that. तो मुझे breastfeeding करना था, ठीक है, मैं करना, अगर if I have to breastfeed my child, मैं किसी भी रेस्टोरेंट में बैठी हूँ, मैं सीधा अपना कवर निकालती हूँ, I open, I start breastfeeding. But have you ever seen anyone else getting uncomfortable because of that?
अगर हो रहे होंगे तो मैंने कभी किसी पे ध्यान नहीं दिया कि मैं अपना आई हैव टू डू इट एंड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. आई एम नॉट स्नॉटिंग को कौन क्या लेते हैं स्नॉट करके, आई शुड नॉट से इट. आई एम नॉट टेकिंग एनी ड्रग्स. आई एम फीडिंग माय चाइल्ड अ चाइल्ड हु इज हंग्री. And that's your basic right. Yeah, and I have to do it. If somebody is getting uncomfortable, I'm sorry, get up and go. True. And feeding is very important. And these also, I've seen ladies who do not want to. There's so many ladies. They come to me. You breastfeed your child? You really breastfeed your child? And why? Why are you even asking me this question that you breastfeed your child? Yes, I breastfeed my child, and that is good. There are ladies who do not want to breastfeed. There are so many ladies who do not want to breastfeed because they feel उनका फिगर खराब हो जाएगा. मेरे ख्याल से breastfeeding is very healthy. ठीक है, फिगर खराब होने के अलावा भी मेरे ख्याल से there are so many good things about it. So consider that. और मैं yes I like breastfeeding. और लोग औरतें ये भी होती हैं कि स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें, दर्द होता है, क्रैक्स होते हैं, ब्लीड करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चे, जो नई जो लड़कियां जो माँ बनी होती हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि इतना दर्द होता है, आई कांट ब्रेस्ट फीड माई चाइल्ड. इट इज़ एक्चुअली पेनफुल व्हेन यू स्टार्ट ओनली फॉर फ्यू डेज एंड देन इट्स अ ब्लेस. भावना, आप अपने आप को इससे डिप्राइव नहीं कर सकते इस फीलिंग से. ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पीपल एंड गवर्नमेंट प्लीज मेक अ रूम और स्पेशल प्लेस फॉर लेडीज हु वांट टू ब्रेस्ट फीड देयर चाइल्ड. इफ़ यू आर फीलिंग अनकम्फर्टेबल ऑफ दैट होल थिंग देन प्लीज़ बनाइए कुछ चीज, बनाइए बाथरूम में मर्दों के लिए भी बनाइए कि वो बच्चों को ले जाए. I think that when we talk about equality, that is what we are looking at. कि सिर्फ ये औरतों के काम नहीं है, लड़के भी करते हैं और करते ही हैं. मैंने देखा ये ले ही जाते हैं. वो एक स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम वाला करेंगे यहाँ पे. ब्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है आपका, did it ever change? Did it evolve over time? What was the perception when you were a little like in your teenage years and growing up years, and today how do you see that difference? जब मैं छोटी थी तब मैंने हर किसी को सुनते देखा है कि ये जो उसको देखा वो कितनी सुंदर है, कितनी गोरी है. तब से लेके काफ़ी बड़े होने तक मैंने सुना ये ज़रूर है कि ये तो कितनी गोरी है, ये तो कितनी गोरी है. मेरी एक मौसी है, ठीक है, मेरी मौसी अंजू मौसी नाम है. हाय अंजू मौसी. I hope she doesn't mind if I talk about her. But I don't know. I'm sorry. You can cut it later if I don't know. But you can mention. I mean, my Anju Mausi is a principal in a school, and she's on a darker side of color, skin tone. और उनका एक और बात बताती हूँ. एक तो darker side में है ही, लेकिन उनका आधा साइड, पूरे साइड पे उनका birth mark जैसा है. It's like two shades. But she's so pretty. मतलब मैंने हमेशा से सुना था कि काले लोग सुंदर नहीं होते हैं. बट मेरी अंजू मौसी तो कितनी सुंदर है. उनकी इतनी बड़ी बड़ी आंखें और जब वो हंसती हैं तो कितनी सुंदर लगती हैं. तो मैं हमेशा, क्योंकि मैं एक दिमाग में रहता था कि अगर आप काले हो तो आप सुंदर नहीं हो. हम बच्चे स्कूल में हाथ रख रख के भी देखते थे कि ज्यादा सुंदर कौन है. That was the conditioning, like we've all exactly. grown up with तो that इस तरह करते थे. मेरी माँ को तो देखा कितनी सुंदर. मैं तो ऐसे कई बार मेरी माँ को देखा, शी इज सो फेयर, शी इज लाइक पीचिश कलर, शी इज सो फेयर. और मुझे लगता था पूरे दुनिया में अगर कोई सुंदर है तो मेरी माँ, बिकॉज शी इज सो फेयर. देन आई रियलाइज्ड अंजू मौसी दैट जैसे जैसे मेरे समझ आने लगी मुझे रियलाइज हुआ एक्चुअली कलर से कोई लेना देना नहीं है. और सुंदरता सबसे ज्यादा क्या होती है कि अगर आपकी स्माइल मेरी आंखों को अच्छी लगती है, मुझे सुकून देती है, अगर आपकी बातें सूदिंग है, यू वेरी प्रिटी, आई वॉन्ट टू लुक एट यू, आई वॉन्ट टू बी विद यू. हर एक फेस जो आपको बहुत प्रिटी लगता है, आपका जो बहुत प्रिटी, जरूरी नहीं है कि उसको भी प्रिटी लगे. ट्रू. 80% लोगों को अगर एक हीरोइन प्रिटी लगती है तो 20% हैं जिनको वो प्रिटी नहीं लगती है. और जिनको अपेरेंटली आप अगली कहते हो, हु इज नॉट प्रिटी, उनको भी वो, अगर 80% लोग उसको प्रिटी नहीं लगती है तो 20% हैं जिनको वो प्रिटी लगती है. तो अपनी अपनी परिभाषा अलग है प्रिटी होने का, ब्यूटीफुल होने का. सो आई थिंक वी आर नोबडी टू जज. फॉर मी शी इज वेरी प्रिटी, फॉर मी यू आर वेरी प्रिटी भावना. आई थिंक यू वेरी कॉन्शियस. दैट डे यू वर टेलिंग मी मैं मोटी हो गई हूँ, आई एम नॉट लुकिंग नाइस. मुझे ऐसा लग रहा था यहाँ पे सच्चाई नहीं निकाल में. मुझे ऐसा लग रहा था कहाँ से मोटी है भावना, कहाँ से. यू वेरी प्रिटी, you are very nice. Look at your smile. And whenever I speak, when I don't like speaking to journalists, I don't like speaking to reporters, I don't like speaking to the media.
I know. But I feel very comfortable talking to you because you have that soothing aura around you. And that is very important. And for me, that is beautiful. Yeah. Not everybody has that. Makeup and face and prettiness and perfect eyebrows and eyes and lips and everything and muscles and everything they can make. Yeah. But they can't get that aura if they don't have it. True. You are born with it, or you have it or you don't have it. So the aura is beautiful, not the face. And I don't think there's anything called ugly. It's about the perception. There's nothing called ugly. Exactly. Everybody has their own perception. Everybody. I hope young girls actually, because I'm also in that journey of sort of accepting yourself. You know, it's a long process, but of course we'll get there one day for sure. But tell me another thing, when you especially enter the industry, what you perceive yourself is different, but how the industry also perceives you is important at the end of the day. क्योंकि काम करना है वहाँ पे, right? Did you ever have people come and say कि यार you're pretty, but maybe if you change something, no, it will be really great. कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं खुद ही अपने आप को जज करती थी. You know, कई बार ऐसा होता है, मैं सच बताती हूँ, ऐसी कई लड़कियां हैं जिनको शीशे में देख के जो वो देखती हैं, मतलब जो शीशे में देखती हैं उनको वो pretty लगती है. They find themselves pretty. I am one of those girls or ladies who do not find myself pretty. I think I am not pretty. I am very average, very girl next door. I am very normal. In fact, when I started this career, I was not sure if I am going to make it. If anybody is going to like me or anybody is going to cast me, anybody is going to take me in this industry. I was absolutely, my confidence of getting in the industry was nada. I didn't think I can ever make it. Then I started with theatres. Theatre में तो beauty का कुछ कोई देखता ही नहीं beauty. वहाँ पे सिर्फ आपकी performance देखते हैं. वहाँ पे मुझे बहुत appreciate किया गया. और वहीं से सबसे पहले मैंने सीरियल शुरू की, रिश्ते और डी लाइन वगैरह शुरू किया था. तो वहाँ से जब देख के जब मैंने मेकअप लगाया, जब मैं स्क्रीन पे आई, मुझे याद है कसौटी का दिन एक बताती हूँ. कसौटी में मुझे जब कास्ट किया गया था, तब एक दिन पहले फ़ोटोशूट किए गए थे. फ़ोटोशूट करके पहले घरों में पिक्चर लगाते हैं ना, जैसे आप घर बना रहे होते हो तो पिक्चर लगाए हुए होते हैं, फ़ोटोज़ लगाए होते हैं फैमिली के साथ घर दिखाने के लिए. तो हमारा जो कैमरामैन है संतोष, मेरा पहला सीन था, पूरे दिन बैठी थी, शाम को पहला सीन आया था. संतोष पूरे सुबह से शूट कर रहा था. गौतम वाज द डायरेक्टर, संतोष वाज द डीओपी. सो व्हेन आई केम, ही सॉ मी, ही सेड ये कौन है? मैंने बोला ये हमारी प्रेरणा. तो बोलते हैं, फिर फोटोज जो लगी थी उनको दिखा के बोलते हैं, फिर ये कौन है? तो उन्होंने बोला ये है. तो बोलते ये आई थिंक दे हैव रिप्लेस्ड, आई एम टेलिंग यू. संतोष बोल रहा था, संतोष सूर्यवंशी. फिर जब मैं कैमरे के सामने आई, मेरा फ़ोन कट था, जब मैं कैमरे के सामने आई, उसने उसको स्क्रीन पे देखा और वहाँ पर मैंने पहली बार किसी को ऐसा चेहरा बनाते हुए देखा था. उसने देख के बोला, that day I realized I look good on screen. I don't care how I look personally, but I look good on screen and this is going to work. Since that day, I was so confident. Every time I would ask Santosh, मैं ठीक लग रही हूँ? तो उसने कहा, हाँ, तुम मस्त लग रही है. So he was my friend, Gautam was my friend. It was such a beautiful unit. The whole thing was so good. So there I realized, you know, honestly, I mean, the fact that you also went through that phase of self-doubt, and you would, because I know when I look at mirror mostly, you're not happy with how you look eventually, you know, you're always looking for faults. That's because your beauty standards are something else. जो तुमको अच्छा लगता है, तुमको वैसे दिखना होता है. लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होता है कि तुम भी किसी की आइडल हो. तुम्हारे जैसा भी कोई दिखना चाहता है. A lot to do with conditioning, because बचपन से you have been told कि, you know, I keep hearing this a lot of times कि अरे if you gain weight you'll never get married. अरे तुझे लड़का कैसे मिलेगा if you, and you're just like, my achievements, like कोई नहीं मिलेगा. And mostly it's for girls, you know, you always have to hear. Thankfully there's been a shift in my family now, because growing up at least I would hear all of that. खाना बनाना सीख ले, वरना माँ क्या करेगी, बाई रखेंगे. But you know, again now today of course your standards and today your perception of beauty has changed. But you know, when you're also growing up, especially with Instagram coming into picture, comments can pull you down. मुझे कभी कभी मेरे फोटोज पे आंटी बोलते हैं तो आई एम जस्ट लाइक,
Bro, what photo are you looking at? Like, auntie, वो कुछ tags है ना, भले ही वो किसी भी intention के साथ बोलो, वो थोड़ा सा ऐसे चुभता है. I have seen under your post sometimes buddhi and all those kind of comments. With time, have you learned to ignore that, or how do you take when someone calls you something like that? Bhavna, for this comment, especially for this comment, I will tell. Bhavna, when I hear buddhi, to be very honest, I feel glad that I'm lucky that I'm growing buddhi. I'm still alive to be buddhi. बहुत यंग लोग ऐसे हैं कि जिनकी ओल्ड पिक्चर नहीं आएगी. I'm so glad I'm growing buddhi and I want to grow buddhi. I want to live my full life with my kids, with my family, taking care of everybody. I want wrinkles on my face, my laugh line. Everything I want. I want to grow old. I don't want to die so soon. I don't want to. And everybody who makes me realize I'm buddhi, I feel so glad that I lived one more year to be buddhi. Oh, she's 41. Oh yeah, I know, I'm 41. I hope I stay till 60, 70, 80. 100. 100. Yeah. With my kids, with my grandkids. I'm so glad I'm buddhi. And I really want you also to be Buddha and buddhi. Healthy. Call me buddhi, I'm fine. I'm fine. Because I want to grow. I want to be here with everybody around. Thank you. I'm buddhi. I just want to applaud at this point because I know it's not easy to take all those comments. मैं बोल रही हूँ ना, आंटी बोल देते हैं उसी में I get a little offended because I'm like, now my personal favorite, Shweta, because it's kind of genetics with me because my mother had a lot of grey hair like from a very young age. I was genetically blessed and I also had it like maybe from 9th standard, मतलब उस age में. And I remember people would look at it and they would be like, oh, you have white hair. Oh my god. And you know, it's just the comments around which can get to you because you are okay with it. But then people will say, oh listen, you have grey hair. And in the beginning, especially when I was in school, I would try to hide it because I would be ashamed of it at one point. You are an actress. You have to be on screen. There are people judging you. Did you ever at all feel uncomfortable? Does the idea of having grey hair or just flaunting I'll tell you why you feel uncomfortable. Why people feel uncomfortable with grey hair? Because they associate it with age. Yeah. That because I'm growing old, I have white hair. बचपन में बोलते थे बूढ़ी हो गई. बूढ़ी हो गई. हाँ. मेरे अपनी मौसियों के भी बाल मैं याद है कि वो एक कहते देख 2 बाल है यहाँ से निकाल नोच और हम नोचते थे उनके बाल व्हाइट हेयर निकालने के लिए. मुझे अभी भी याद है. फिर मैंने देखा एक बार मेरे स्कूल में एक बच्चा था मेरी क्लास में, मैं प्राइमरी में थी, उसके मैंने व्हाइट हेयर देखे थे. मैं प्राइमरी में टाउन में काला चौक में अभ्युदय नगर करके एक स्कूल था. मैं प्राइमरी में वहाँ थी 5th स्टैंडर्ड तक. उसके बाद मैं माजगांव में गई थी सेंट इजाबेल्स में. तो वहाँ पे एक लड़का था जिसके वाइट हेयर थे. वो 4th में था, आई डोंट नो. ओके. तब मैंने सोचा था कि इसके वाइट हेयर क्यों हैं. तब तो मुझे आइडिया नहीं था कि वाइट हेयर तो किसी के भी होते हैं यार. तो मैंने सोचा इसके वाइट हेयर क्यों हैं. ठीक है, ये तो बुढ़ा नहीं है. मैंने अपनी माँ को जाके पूछा कि वाइट हेयर तो उसके हैं, वो तो बुढ़ा नहीं है, उसके वाइट हेयर क्यों हैं. तो मम्मी ने बोला क्योंकि बुढ़ों के वाइट हेयर है, ऐसे ज़रूरी नहीं है. वाइट हेयर किसी के भी होते हैं. तो ये तुमको किसने बोला कि बुढ़, क्योंकि बचपन से हमने इसी तरह सुना है, इसीलिए हमें अभी भी शर्म आती है कि हमारी वाइट हेयर है. ओह मैं बुढ़ी हो गई, छुपा लो सबको लगेगा कि हमें 5-10 साल छोटा बताना है. मेरे ख्याल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. अभी भी मेरी जो फोटोज जो आप बोलते हैं ओ वेरी हॉट एंड वेरी हॉट पिक्चर्स, उसमें भी कहीं ना कहीं देखो तो मेरे वाइट हेयर दिखते हैं. अभी भी देखो मेरे को तुम देखोगे मेरे वाइट हेयर है. क्योंकि मैं जब तक मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे कैरेक्टर की स्क्रीन पे कलर करने की, मैं एक तो बहुत लेजी हूँ. आई डोंट वांट टू गो टू द पार्लर्स टू यू नो एट टाइम्स. मैं नेल्स नहीं करवाती, पेडिक्योर. मैं आई जस्ट डोंट वांट. मेरे आईब्रोज भी ग्रो किए रहते हैं. Unless required, you don't. Unless it is required, because whatever beauty I need for the screen. The perfect beauty is for the screen. Otherwise, in life, I'm warm enough to look beautiful.
So I don't really need to color my hair and put a liner or a lip gloss or a rouge to look pretty. Whenever I go and smile while बस I am pretty. मतलब बस अभी अगर ये So- बॉलीवुड गाना ही बज जाता है So that's all I need. I like even if I'm not in makeup, my child loves me and he thinks I'm very pretty. Even if I'm not in makeup, when I go down, all uncle and aunties who are really my uncle and aunties, they feel very happy. They smile and they and say you radiate hi. happiness in others' life as well, and that is Yes, most so important, I think right? and that's why I don't care if I have a grey hair or not. It doesn't matter. So lastly now, because this is something I want to do, this journey of self-love is not easy. In today's time, because of social media and the pressures that it comes with, it is all the more difficult. You can be happy with your body, but the world keeps telling you that you have to look a certain way. In a certain way. You know, if and you're not that- looking a certain way, Yeah. you're not pretty. And that can get to you. So how do you, and I also want to know Palak's perspective towards it, because wo to matlab, she's grown in this digital age, so she is more prone to get affected by all this, more than you, in fact. How does she deal with it, and how do you deal with it? My daughter is very mature, to be very honest, if I'm telling you. We normally don't discuss. At times she asks, am I very thin? Am my nose very, is too long? पूछती है. तो मैं सोचती हूँ ऐसा ये क्यों पूछ रही है? किसी का सुन के पूछ रही है या खुद मुझसे पूछ रही है? तो मेरा क्वेश्चन ये होता है, what do you think? You think you're pretty? You think you're too thin? If you think you're too thin, start eating. Gain weight. तुम्हें लगता है तुम्हारी नाक बहुत बड़ी है, तुम्हें करता है तो हम कुछ करेंगे अगर नाक बड़ी है तो. पर प्रॉब्लम दुनिया की ये है कि अगर आप नेचुरल हो तो आपकी ऐसी तैसी बचा देंगे कि आपका ये खराब है, आपका वो खराब है, आप मोटे हो, आपका ये निकला है वो. और अगर आपने कुछ करा लिया तो फेक है, ये नकली है, ये प्लास्टिक है, ये तो ये समझ में नहीं आता भाई. कहाँ खुश हो तुम? क्या चाहिए तुमको? और मेरे ख्याल से फेक कुछ नहीं होता यार. मुझे एक सर्टेन वे में दिखना है. मुझे वो नहीं बनना जो भावना चाहती है मुझे बनने के लिए. मैं जो चाहती हूँ. और मुझे अगर लगता है कि मैं बहुत मोटी हूँ, मैं लाइपोसक्शन करके अपनी whatever जो निकाल दूंगी और मैं पतली हो गई, तो that is not fake. I've done what I want to do. Yeah, you have the resource, you can do it. I can do it, and that is not, nothing is fake. तो ये तो वही बात हुई कि सारे जो प्राइमरी कलर्स हैं वो नेचुरल है और जो सेकेंडरी कलर्स हैं वो फेक है, क्योंकि एक दूसरे से मिलके बनाते हैं. इस हिसाब से अगर कोई अपने जेंडर के साथ खुश नहीं है, उसने अपने आप को चेंज कर लिया, वो फेक हुआ. वो फेक नहीं हुआ. True. वो फेक नहीं है, वो रियल है. उसने बहुत बड़ा वो लिया है. लोग कहते हैं भगवान ने जो दे दिया उसमें खुश रहो. बहुत अच्छी बात है, भगवान ने जो दे दिया उसमें खुश रहो, अगर आप खुश हैं तो. वरना तो भगवान ने तो सूखे चावल और दाल दिए हैं, पका क्यों रहे हो उन्हें? ऐसे चबाओ. अब खाना क्यों पकाते हो? डोंट कुक. उसमें मसाले क्यों डाल रहे हो? मसाले मत डालो. अब मेकअप क्यों? आप ये फेक. उसके हिसाब से तो जिस तरह बॉडी आप बना रहे हो और इतने वो फैट बर्नर्स और वो क्या कहते हैं उनको, स्टेरॉइड्स वगैरह ले रहे हो, वो भी फेक है. एवरीथिंग इज फेक. You're nobody to decide whether that is fake or not. That's the certain way they want to, they want themselves to look like that. Let them be. True. फेक वो है जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको क्या चाहिए, And जो दूसरों को जज कर जो रहे हैं. दूसरों को जज कर रहे हैं. Yeah, true. I agree, and on that note, thank you so much, Shweta, because I feel that today whatever we have discussed, part of it I have also faced, and that's only been conditioning, and we are all in that process where we Yeah, are true. accepting ourselves and just be like, it's okay, we can be whatever we want. Whatever we want. Yeah. And you don't have to. Eventually, they accept it. Yeah. और वो तब तक ही आपको इफेक्ट कर सकते हैं, वो तब तक ही आपको बोलते हैं जब तक उनको पता होता है कि आप को अफेक्ट हो रहे हैं. The moment they feel you're not affected, they start liking you, and you become an example for them. So I think we should not care about this. I think जैसे मैंने स्टार्ट किया था वैसे ही मैं एंड भी करूँगी, which is the post or the quote that you had shared, that you shouldn't care what others are saying, as long as you are happy, as long as you are right. making yourself and your family happy. I think that is the most important thing. Yeah. And who better And if you're right. Right as Yeah. well. Right और wrong का तो मतलब श्वेता का connection है उस चीज को लेके, so definitely. But and who better than you
telling us all of this and chatting with me about it, because I know that, and I genuinely mean it when I say it, that you are an epitome of someone who represents strength. That's to very me. sweet of you. I hope together we can debunk all the more stereotypes that we have, and soon we move towards an equal world. Thank you so much. Thank you, Bhavna. Hey, if you like this video, please like, share and subscribe Bollywood Bubble.